अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is excellent qualities of Medina al-Munawwara. The excellent qualities of Medina, the illumined Medina al-Munawwara. And inshallah next Jumat Mubarak we will start about the Muharram. Prophet ﷺ said, and this hadith is a famous hadith of Bukhari and Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. Prophet ﷺ said, if you want to see the Jannah in this world, on the earth, you can see the Jannah. If you want to see, you can come in Medina and you can see. Prophet ﷺ said, what is the between my home and my pulpit is one of the gardens of the paradise. Wa mimbari ala hawdi, and my pulpit is on my basin. Between the place between the Prophet ﷺ's home, where now the qabr of Prophet ﷺ, between the place is the piece of Jannah, according to hadith of Prophet ﷺ, कि वो जन्नत का टुकड़ा है जो जगह मिंबर से लेकर आका अलैहिस्सलाम की कब्र के दरमियान है. This is the piece of Jannah. And Prophet ﷺ said about the Medina, according to Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Allah's Messenger ﷺ said, closer to the last hour, between closer to the day of judgment, जैसे करीब करीब होते जाएंगे, इन्नल ईमान ला यअज़िरु इलल मदीना कमा ताज़िरुल हय्यतु इला जुहरिहा. Closer to the last hour, faith will surely squeeze into Medina, just as the snake squeezes into its burrow. जैसे सांप दौड़ता है अपनी बिल की तरफ, ईमान भी मदीने की तरफ चला जाएगा. ये मदीना शहर के बारे में मेरे आका ने फरमाया, because this is the city of Prophet ﷺ, मेरे आका का शहर है. According to Anas radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. متفق عليه. According to Anas radiyallahu ta'ala anhu, Prophet ﷺ said, Medina is a sanctuary from such and such to such and such a place. Prophet ﷺ said, this place from here to there, between two mountains, from here to there, this is the Medina. Its trees may not be choked. दरख्त नहीं काट सकते वहां पे. This is the city of Prophet ﷺ. दरख्त काटना मना है. And no disruption should be invented within it. कोई फितना फसाद नहीं कर सकते वहां पे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते.
बर्दाश्त करें बस. If someone originates any disruption within it, he is the subject to the curse of Allah, the angels and the people. अल्लाह की भी लानत उस पर, फरिश्तों की भी और लोगों की भी, जो फसाद करे मदीना के अंदर. मदीना में सब कुछ बर्दाश्त करे बस. ये मोहब्बत वाला शहर है, मेरे आका का शहर है. According to Jabir radiyallahu ta'ala anhu, and this hadith from Muslim, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع إداؤها ولا يصاد صيدها. رواه Muslim. Prophet ﷺ said, certainly Ibrahim ﷺ sanctified Mecca and I have sanctified Medina between its two tracts of black stones. Its thorny shrubs may not be cut and its animal game may not be hunted. मक्का को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हरम बनाया था और मदीना को मेरे आका ने फरमाया मैंने हरम बनाया. और इसके कोई दरख्त नहीं काट सकते, झाड़ियां नहीं काट सकते, कोई शिकार नहीं कर सकते. This is the hurma of Prophet's city, Medina. According to Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا عذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه Muslim and Nasai. Prophet ﷺ said, no one wishes the people of Medina ill without Allah melting him as lead is the melted in the fire or as salt is dissolved in the water. अगर मदीना के लोगों को तंग करोगे किसी हवाले से, फिर तुम्हारा हाल ये होगा, इस तरह तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा जैसे नमक पानी में खत्म कर दिया जाता है. This is the city Medina, the city of Prophet alayhi salatu wasalam. And according to Abu Huraira radiyallahu ta'ala, this hadith from Bukhari and Muslim, Allah's Messenger alayhi salatu wasalam said, there are angels appointed on the roads of Medina as guards. Neither the plague nor the Antichrist can enter it. ताउन की बीमारी मदीना में नहीं जा सकती, बाकी हर जगह जा सकती है, लेकिन ताउन की बीमारी मदीना में नहीं जा सकती. अकॉर्डिंग टू हदीस ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और दज्जाल भी नहीं जा सकेगा, ना मक्का में ना मदीना में. अकॉर्डिंग टू अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु, Prophet ﷺ said, the terror of the false Masih, mean Dajjal, will not enter Medina. It will have 7 gates on that day with 2 angels over each gate. चारों तरफ, around the Medina, only we have 7 gates and every gate had 2 angels as a guard over there. According to Anas radiyallahu ta'ala anhu, Prophet ﷺ supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet ﷺ made dua, Allahumma ij'al bil Madina di'fai ma ja'alta bi Makkah min al barakah. Prophet ﷺ made dua, supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, install in Medina twice as much blessings as you have installed in Makkah. आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमा दी कि मदीना में डबल बरका दे, जितनी तूने बरका मक्का में रखी है. और वैसे मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने उम्रा किया था 2013 में, तो सारी चीजें मदीना में सस्ती थी मक्का की निस्बत. दिस इज द बरका. एवरीथिंग, मे बी यू हैव एक्सपीरियंस, if you visit, if you did
Hajj or Umrah, everything in bazaar in the Medina is cheapest than Makkah. This is the barakah. This is the dua of Prophet ﷺ. And next hadith is from Muslim and Nasai. Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, he said, I heard Allah's Messenger ﷺ say, if someone patiently endures its difficulties and its hardship, I shall be the witness for him, or an intercessor on the day of resurrection. He was referring to Medina. वहाँ की मुश्किलात, हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज बर्दाश्त करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे लिए शफाअत फरमाएंगे। मदीना की मुश्किलात बर्दाश्त करें, उफ तक न कहें वहाँ पर। This is Medina. And according to Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Prophet अलैहिस्सलातु वस्सलाम said, no member of my community, mean any Muslim, will patiently endure the difficulties of Medina and its hardship without my being an intercessor for him on the day of resurrection or a witness. If you endure the difficulties and hardships of Medina, then Prophet ﷺ will be the intercessor for you on the day of judgment. And he will give the witness of your iman. ये ईमान वाला था, इसने वहां पे सारी मुश्किलात बर्दाश्त की। अल्लाह इसके ईमान की मैं गवाही देता हूँ। तो जिसके ईमान की गवाही मेरे आका अता फरमा दे, उसके ईमान में कोई शक रह जाता है। This is the Medina. May Allah give us tawfiq to endure the difficulties and understand of the excellent qualities of Medina. May Allah accept it. Please pray for Sunnah.